Hello friends, and today we are going to discuss WBJEE important physics questions. So here is the first question of physics. It was PYQ of WBJEE 2025. So let's solve this question. In the question we are given that consider a particle of mass 1 gram and charge 1 coulomb is at rest. Now the particle is subjected to an electric field E is equal to E naught sine omega t in the x direction, where E naught is equal to 2 Newton per coulomb and omega is equal to 1000 rad per second. The maximum speed attained by the particle is. So to solve this question, first of all, here let's write down what's given in the question. Like m is given here 1 gram, that is 1 by 1000 kg. Charge is given here 1 coulomb and E naught is given here 2. So our E on the basis of t, I mean E with respect to t will be E naught का वैल्यू दिया है हमारे पास 2 sin omega t and omega is equal to 1000 rad per second. The maximum speed attained by the particle is. क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम स्पीड क्या है हमारे पास, तो इसको हमें सॉल्व करना है. तो हमें लिखना होगा F इज इक्वल टू क्यू ई इम्प्लाइज एम ए इज इक्वल टू क्यू ई. इसको अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे इसका, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हमारे पास ए इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम. तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, वो यहाँ पे क्यू क्या है हमारे पास, क्यू बाई एम, और ई क्या है हमारे पास, यहाँ पे ई है हमारे पास 2 sin ओमेगा टी. तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलेगा, मतलब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा. तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड से. तो दोनों साइड से अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्वियसली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डी टी आप लिख लो यहाँ पे. सो इसको इंटीग्रेट करके जो वेलोसिटी का वैल्यू आएगा हमारे पास, वो आएगा क्यू बाई एम. तो अलग हो जाएगा, क्यू बाई एम का वैल्यू है हमारे पास 1/1000, मतलब 1000 हुआ. 2 भी अलग हो जाएगा, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे टी के सामने ओमेगा लिखा है तो ये ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा. और आप देखो एक चीज़ की, सो v का वैल्यू क्या है हमारे पास, सो v इज इक्वल टू 1000 इंटू 2 बाई ओमेगा का वैल्यू है हमारे पास 1000, ओमेगा का वैल्यू 1000 है, सो 1000 हमने लिख लिया, और माइनस कॉस ओमेगा टी, और एक सेकेंड यहाँ पे प्लस सी भी हो जाएगा, प्लस सी, माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस सी. और आप देखो कि यहाँ पे दिया हुआ है इज़ एट रेस्ट, मतलब एट टी इज़ इक्वल टू 0, यू इज़ इक्वल टू 0, मतलब टाइम 0 पे इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगा. और जो ओमेगा का वैल्यू है यहाँ पे, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास दिया है 1000 रैड पर सेकेंड, और माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी, मतलब माइनस कॉस ओमेगा टी आप ऐसे मान लो. सो इससे एक सेकेंड, ओमेगा का वैल्यू हमने पहले लिख लिया था, हमने गलती से 2 बार लिख लिया यहाँ पे. सो इससे मैंने इसको काट दिया, तो जो आंसर बना हमारे पास वो बना प्लस सी, v इज इक्वल टू -2 कॉस ओमेगा टी प्लस सी. ये हुआ हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. अब आप देखो कि t इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया मोशन. सो आप t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो 0 इज इक्वल टू -2 कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 प्लस सी. सो c का वैल्यू हो गया हमारे पास 2, c इज इक्वल टू 2 हमने देख लिया. सो जो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास -2 कॉस ओमेगा टी प्लस 2, और कॉस ओमेगा टी
इसका वैल्यू -1 से +1 हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी को अगर मैक्सिमम होना पड़ेगा तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली -1 होना पड़ेगा, ताकि 2 + 2 = 4 बन जाए, 4 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर, मतलब ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ WBJEE 2025 PYQ. So in this question here is given that the number of undecayed nuclei in a sample of radioactive material as a function of time t is shown in the figure. Which of the following graphs secretly show the relationship between n and the activity A? To solve this, say in graphs we have to find the relationship between n and activity A. So if we talk about radioactive decay, so if we talk about radioactive decay, then we must remember an equation that for radioactive decay A is equal to lambda n, where lambda is decay constant and n is number of undecayed particles at an instant, and A is the rate of decay, and A is rate of decay. So for finding the graph between n and A, you can see that A and n are directly proportional to each other, and when A is equal to 0, at that instant n is equal to 0. And from analyzing all these graphs, we can see that there only exists one graph in which at A is equal to 0 you can see n is equal to 0, and in neither graphs when A is equal to 0 then n is equal to 0. Only in option A here is n is equal to 0 when A is equal to 0, and you can see that the graph of n and A are directly proportional. I mean, as n increases, A increases proportionally, and you can even think it like that: A is equal to lambda n as y is equal to mx. So it will be an equation of straight line passing through origins. So option number A will be the correct option here. In this question we are given that a single slit diffraction pattern is obtained using a beam of red light. If red light is replaced by blue light, then it's a question of WBJEE 2025 PYQ. So for solving this, you need to know the relationship that y is equal to, y मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा है, इसको हम y बोलते हैं. y इज इक्वल टू लैम्डा d बाई a, और a होता है हमारे पास स्लिट विथ, और d होता है हमारे पास स्लिट के मतलब स्लिट और जो स्क्रीन है उसके बीच में डिस्टेंस, और जो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा का जो हमारे पास विथ आता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 लैम्डा d बाई a. सो इससे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो विथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और आपको पता है कि लैम्डा ऑफ रेड ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ ब्लू, क्योंकि आपको पता होगा कि जो वेवलेंथ होता है वो रेड का सबसे ज़्यादा होता है. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में जो रेड होता है उसका वेवलेंथ हाईएस्ट होता है हमारे पास. सो ये ग्रेटर देन ब्लू होगा ऑब्वियसली. सो अगर ये ग्रेटर देन ब्लू हुआ हमारे पास, सो द वेवलेंथ ऑफ रेड इज़ ग्रेटर देन ब्लू, सो इट विल मीन दैट द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ ब्लू यूजिंग ए बीम ऑफ रेड लाइट. इफ रेड लाइट इज रिप्लेस बाई ब्लू लाइट, देन अगर रेड लाइट को हम ब्लू लाइट से रिप्लेस कर देते तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखो कि जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास फ्रिंजेस विल बिकम नैरोअर एंड क्राउडेड टुगेदर बी. क्योंकि आप देखो कि ब्लू लाइट का जो लैम्डा है वो तो कम है यहाँ पे रेड लाइट से, मतलब रेड लाइट का लैम्डा ज़्यादा है, ब्लू लाइट का कम है. तो अगर ब्लू लाइट का लैम्डा कम है तो विथ भी कम होगा, तो फ्रिंजेस विल बिकम नैरोअर. अगर विथ कम हुआ तो फ्रिंजेस बिकम नैरोअर, क्योंकि और दूसरे कोई ऑप्शन में यहाँ पे नैरोअर है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ WBJEE 2025 PYQ, और इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि द डी ब्रॉगली और द डीब्रा वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग बस विथ स्पीड v इज लैम्डा. जो डीब्रा वेवलेंथ है ऑफ ए बस मूविंग विथ स्पीड v इज लैम्डा. सम पैसेंजर्स लेफ्ट द बस एट ए स्टॉपेज
स्टॉपेज पे कुछ पैसेंजर्स उतर गए बस से। नाउ व्हेन द बस मूव्स विथ ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, अब बस ने मूव करना स्टार्ट किया अपने जो इनिशियल स्पीड था उसके ट्वाइस, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ फाउंड टू बी ट्वाइस ऑफ इनिशियल वैल्यू, जो इसका काइनेटिक एनर्जी आया फाइनली वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का डबल हुआ। सो व्हाट इज़ द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द बस नाउ, तो बस का अभी का डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होगा अगर पिछला डी ब्रॉय वेवलेंथ इसका लैम्डा हुआ तो। सो पहले हम इनिशियल स्टेट लिख लेंगे फिर हम फाइनल स्टेट लिख लेंगे। तो इनिशियली और फाइनली, सो इनिशियल स्टेट में यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है मास m1, वेलोसिटी v और काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होगा हाफ m v1 स्क्वायर। हमने मान लिया कि इसका पहले मास m1 था और इसका डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होगा आपको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी होता है, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट बाई मोमेंटम। सो लैम्डा इज इक्वल टू हमने लिख दिया यहाँ पे h बाई m1 इंटू v। सॉरी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये होगा हमारे पास हाफ m1 v स्क्वायर, नॉट हाफ m v1 स्क्वायर, ये होगा हाफ हमारे पास हाफ m1 v स्क्वायर। सो ये होगा हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ और जो फाइनल वैल्यूज़ होगा हमारे पास वो आएगा वेलोसिटी होगा हमारे पास 2v, क्योंकि आप देखो कि नाउ व्हेन द बस मूव्स विद ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, सो वेलोसिटी हो जाएगा हमारे पास 2v और जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इट्स काइनेटिक एनर्जी इज फाउंड टू बी ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हमारे पास m1 v स्क्वायर, यह होगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो हमें निकालना होगा कि जो नया मास होगा हमारे पास m2 वो क्या होगा। हमारे पहले हम निकाल लेंगे कि m2 जो नया मास आएगा हमारे पास वो क्या आएगा। तो हम इसमें लगा देंगे एनर्जी कंजर्वेशन, तो चलो लगा देते हैं इसमें एनर्जी कंजर्वेशन। उस एनर्जी कंजर्वेशन लगा के कुछ ऐसा बनेगा हाफ m1 v स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी इसमें एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा, इसमें कुछ और लगेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास m1 v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी दिया है और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है हमारे पास वो होता है हाफ m v स्क्वायर, हाफ यहाँ पे m2 है और v मतलब v स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4v स्क्वायर। सो यहाँ पे v स्क्वायर और v स्क्वायर कैंसिल हो गया और 2 से ये 2 आ गया। सो जो m2 होगा वो होगा हमारे पास m1/2। सो m2 का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गया m1/2। सो m2 का वैल्यू हमने निकाल दिया कि m2 का वैल्यू होगा हमारे पास m1/2। और सो लैम्डा का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, आपने देखा कि लैम्डा होता है हमारे पास h/mv, लैम्डा इज इक्वल टू h/m2v2। इससे हम निकाल लेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h/m2 का वैल्यू है m1/2 और v2 का वैल्यू है 2v। सो ये 2 से ये 2 कट गया और लैम्डा आ जाएगा h/m1v आ जाएगा, ये m1v था हमारे पास। सो इनिशियल लैम्डा फाइनल लैम्डा सेम हो गया, तो आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा लैम्डा। सो 13 का ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ WBJEE 2025 PYQ और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमैन सीरीज लाइन्स इज p, देन द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ दिस लाइन्स इज। हमें दिया है कि जो लाइमैन सीरीज़ है उसका जो मिनिमम वेवलेंथ है वो है p। सो मैक्सिमम वेवलेंथ इसका क्या होगा। सो आप देखो कि जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वेवलेंथ का वो आता है हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू r 1/, आप देखो कि मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमैन दिया है। सो 1/, हम लिखते हैं कि n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। सो n1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे n1 का वैल्यू हमारे पास है लाइमैन मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, मतलब n1 का वैल्यू यहाँ पे है 1 हमारे पास। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/λ का वैल्यू आएगा हमारे पास r 1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा हमारे पास 1/λ का वैल्यू। तो यहाँ से हमें लैम्डा का वैल्यू निकालना होगा। आप एक बार ऐसे कर लो कि 1/λ इज इक्वल टू r
1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर जो कि इन्फिनिटी होगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई आर, ये ऐसा बन जाएगा। और एक बार आप इस n2 के जगह 2 पुट कर दो क्योंकि हमें निकालना है मैक्सिमम, क्योंकि मिनिमम दिया हुआ है सो हमें निकालना है मैक्सिमम। सो एक बार हमने ये निकाल लिया और एक बार हम 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1 बाई 2 पुट कर लो। सो ये 1 बाई 4 बन जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 हमारे पास। सो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 इज इक्वल टू आर 3 बाई 4। सो लैम्डा हो जाएगा हमारे पास 4 आर बाई 3। सो लैम्डा हो जाएगा हमारे पास 4 बाई 3 आर, 4 आर बाई 3 नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये क्या हो गया। सो लैम्डा का जो वैल्यू आया हमारे पास, वो लैम्डा का वैल्यू हमारे पास आया 4 बाई 3 आर, 4 बाई 3 आर। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि लैम्डा का एक वैल्यू ये आया और लैम्डा का दूसरा वैल्यू ये आया। सो दिस विल बी द maximum value of lambda and this will be the minimum value of lambda. So the minimum value of lambda, so minimum value of lambda is already given as p is equal to 1 by r. So if p is equal to 1 by r, then lambda is equal to 4 by 3p. So option number A will become the correct answer. So in this question we get that the option number A, that is 4p by 3, will be the correct option. This is a question of WBJEE 2025 PYQ. In this question we are given that the minimum force required to start pushing a body off a rough inclined plane is F1. मतलब जो फोर्स लगता है एक बॉडी को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पुश करने में वो है F1 एंड व्हेन द मिनिमम फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग F2. और जो स्लाइडिंग करने का मिनिमम फोर्स लगता है, मतलब स्लाइडिंग करने के लिए जो मिनिमम फोर्स चाहिए प्रिवेंट करने के लिए, वो होता है F2. इफ़ द inclined plane makes an angle theta with the horizontal such that tan theta is equal to 2 mu, then the ratio of F1 by F2 is. So for solving this question, let's see how to solve it. The minimum force required to start pushing a so let us draw an inclined plane and let us draw a block on it. Let the block be of mass m. The minimum force required to start pushing a body up a rough inclined plane is F1. So this force is called F1. This force is mg. This force is mg sin theta. This force is normal reaction and this force is mg cos theta, where n is equal to mg cos theta to balance it in this direction, mg cos theta. So the frictional force will become mu mg cos theta. Here given the minimum force required to start pushing. So when we start pushing it upward, then the friction will act downward. So the frictional force will become here mu mg cos theta. So F1 will be mg common sin theta plus mu cos theta. So this will become the value of our F1. Now we have to calculate the value of F2. For calculating the value of F2, let us draw an inclined plane and a body of mass m and force F2, because in the question given that if the inclined plane makes an angle theta with horizontal, then tan theta is equal to 2 mu once again, while the minimum force needed to prevent it from sliding is F2. Sorry, in the question it's given the minimum force to prevent it from sliding. Here it is given the minimum force to prevent it from sliding. So sorry, the force will not act downwards, the force will act upwards. The force has to work upwards. But I think in this situation the direction of friction will get reversed, because in the previous question you can see that we were given minimum force to push body up an inclined plane is F1. So if we are pushing a body up an inclined plane, then obviously
the friction will act in downward direction, and see the condition, and when we are trying to prevent it from sliding by applying a force, then the friction will definitely act in the opposite direction. So if here we can see that the force given is F2, while the minimum force needed to prevent it from sliding is F2. So we have already given a force F2. Here it is mg, here it is mg cos theta, here it is n is equal to mg cos theta, here it is mg sin theta. These things are okay, and these things are like the previous question. These things are same as the previous question, but in this situation, while the box is sliding down, see, if the box is trying to slide down, then the frictional force will oppose the sliding, so the frictional force will be in the direction of force, that is F is equal to mu mg cos theta. So the force will become here like you can see F2 is equal to mg sin theta, because we are trying to prevent it from sliding down, so the force will be F2 will be mg sin theta minus mu mg cos theta, mg common, sin theta minus mu cos theta. So F1 by F2 is equal to F1 by F2. See, here mg and mg will get cancelled, so the final answer will become sin theta plus mu cos theta divided by sin theta minus mu cos theta. So this will become the answer. Now since the value of tan theta is given, then we have to check it out. Divide, and now do one thing, that divide both the numerator and denominator by cos theta. Divide by cos theta both the numerator and denominator, then it becomes tan theta plus mu divided by tan theta minus mu. And in the question it's already given that tan theta is equal to 2 mu, so 2 mu plus mu and 2 mu minus mu is equal to 3 mu by mu is equal to 3. So the final answer that will become is 3. So option number D will become correct. This is a question from WBJEE 2025 PYQ from the concept of logic gates, that is in the semiconductors chapter of NCERT. This was asked in WBJEE 2025 PYQ physics. So in this question it's given that which logic gate is represented by the following combination of logic gates. So it's a very simple question because it's a very simple diagram, you can see it. So it's A input, it's B input, and see here is a triangle with a bubble. Triangle with a bubble signifies here NOT gate. NOT gate, and here you can see that this symbol with a bubble is NOR gate. So we have to perform the operations of NOR gate and NOT gate. See here and A and B are the inputs. Here we have inputs A and B. See, for the input A, it passes through a NOT gate, and when A passes through a NOT gate, we have to add a bar on it. Similarly for B, when it passes through a NOT gate, we have to apply a bar on B. And see here, A bar and B bar, both of them passes through a NOR gate, and here we have to apply the function of the NOR. See, A and B both passes through this gate, so A plus B, and as this is a NOR gate, so above it will be a total bar. So according to De Morgan's law, we have to apply here De Morgan's law. According to De Morgan's law, if there is something like this A plus B, then we can write this like dot, मतलब इसमें ए के ऊपर बार आएगा और उसके ऊपर बार आएगा टोटल के ऊपर, और बी के ऊपर बार आएगा और टोटल के ऊपर बार आएगा. सो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बार से बार, मतलब बार के ऊपर जब बार होता है तो वो कैंसिल हो जाता है. तो ये बनेगा हमारे पास ए डॉट बी, मतलब ए बी. ये जो ए बी हुआ हमारे पास, एक
कौन से टाइप का गेट हुआ, ये हुआ हमारे पास एंड गेट, क्योंकि जो एंड गेट होता है वो ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ये एंड गेट हो जाएगा एंड ऑप्शन बी होगा हमारा फाइनल ऑप्शन। We are here given a question from WBJEE 2025 and we need to solve this question. This question was asked in physics in WBJEE 2025 PYQ. So let's see the question. This question tells that the resistance R is equal to V by I, where V is 25 plus minus 0.4 volt and I is equal to 200 plus minus 3 ampere. The percentage error in R is, we need to calculate the percentage error in R. And remember here that for calculating percentage error we need to solve it in this way, like for calculating percentage error in R, we need to first calculate the percentage error in V and then calculate percentage error in I, and after that you add them. So let's solve this question. Calculate percentage error in voltage. For calculating percentage error in voltage, we are given V is equal to 25 and delta V is equal to 0.4 and I is equal to 200 and delta I is equal to 3. So percentage error in resistance is equal to percentage error in V plus percentage error in I is equal to delta V by V into 100. Percentage error in V क्या होगा, delta V by V into 100 प्लस यहाँ पे delta I by I into 100, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल परसेंटेज एरर इन आर. सो डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी हमारे पास है 0.4 बाई 25 इंटू 100 प्लस डेल्टा आई है 3 बाई 200 इंटू 100. सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1.6 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 3.1%. सो जो फाइनल आंसर होगा हमारे पास वो होगा 3.1% एरर. सो ऑप्शन नंबर सी विल बिकम द करेक्ट ऑप्शन. This is a question of WBJEE 2025 PYQ of physics. So here in this question it's given that manufacturers supply a Zener diode with Zener voltage Vz is equal to 5.6 volt and maximum power dissipation Pz max is equal to 1/4 watt. This Zener diode is used in the following circuit. Calculate the minimum value of the resistance R is in the circuit so that the Zener diode will not burn when the input voltage V in is equal to 10 volt. So for solving this type of question, first of all let's see what's given in the question. It's given that the voltage across the Zener diode, it means the voltage in this part of the Zener diode is Vz is equal to 5.6 volt and the maximum power dissipation, that is Pz max is equal to 1/4 watt. इसका मतलब है 1/4 watt का मतलब है 0.25 watt. सो ये हमने लिख लिया. इसके बाद हमें क्या करना है, द ज़ेनर डायोड इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सर्किट. आप देखो कि V इन इज इक्वल टू 10 वोल्ट दिया है हमारे पास. सो आप देखो कि वोल्टेज, आपको पता है कि वोल्टेज जब यहाँ से जाएगा तो इन दोनों में पैरेलल में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ज़ेनर डायोड लगा हुआ है. सो जो वोल्टेज है वो इक्वल डिवीजन इसमें नहीं आएगा, वोल्टेज में इसमें इक्वल डिवीजन नहीं आएगा. सो आप देखो कि जब वोल्टेज इसमें डिवाइड होगा तब जो V in is equal to Vz जो वोल्टेज होगा वो होगा हमारे पास V in is equal to Vz प्लस VRS. So the Zener diode is used in following circuit. Calculate the minimum value of resistance Rs in the circuit so that Zener diode will not burn when the input voltage is V in equal to 10 volt. So हमने इसको इक्वली डिवाइड कर दिया V से, मतलब हमने इसको डिवाइड कर दिया V इन इज इक्वल टू Vz प्लस VRS. V इन इज इक्वल टू Vz प्लस VRS, ये होगा हमारे पास टोटल वोल्टेज. सो जो इसमें VRS आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा V इन 10 माइनस Vz. और जो Vz है इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. आप देखो कि Vz ऑलरेडी दिया है हमारे पास 5.6. VRS इज इक्वल टू 10 माइनस 5.6 होता है हमारे पास 4.4 वोल्ट. तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस हमें ऑलरेडी मिल गया कि 4.4 वोल्ट होगा. और आपको पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है. सो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि
कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एस मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका, P इज इक्वल टू वी आई, ये तो आपको पता है, P इज इक्वल टू वी आई ये होगा, लेकिन आप देखो कि हमें इसमें R के टर्म्स में निकालना है, एंड वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, सो R is equal to V by I. And remember, for R to be minimum, I must be maximum. And to calculate maximum value of I, we need maximum value of P divided by V. Maximum value of P here is given 0.25 divided by V. So we will get the value of I, and V is the value, and V is not the value of the RS, but V is the value of VZ, because you see here we have taken into consideration VZ, so we need to take the value of here we have taken in consideration PZ max, so we need to take the value of VZ, that is 5.64. 5.6, this is the value of I is 0.25 divided by 5.6, so R will be, so the value of R will be V by I. So let's calculate the R. R will be V RS by I max, because we need R min, so we need I max, so this is the value of I max. So VRS is given here 4.4, so the final answer will become 4.4 divided by 0.25 by 5.6 is equal to 4.4 into 5.6 by 0.25 is equal to, after solving this we will get 98.56 ohm. So option number A will become the correct option here, 98.56 ohm. This is a question of WBJEE 2025 PYQ of physics. In this question it's given that figure shows the graph of angle of deviation delta versus angle of incidence I for a light ray striking a prism. The prism angle is. To solve this, here in the question we have to find the prism angle, and the graph is given with respect to delta, that is angle of deviation, and angle of incidence. So for solving this type of graphs, remember one condition, that you see the angle of deviation at 30 degree. When the angle of deviation is 30 degree, then the value of I, we get the two value of I, that is 15 degree and 60 degree. I is equal to 15 degree and 60 degree. So you remember that there is only one deviation, that is the minimum deviation, in which we get only one value of I. Otherwise at all deviation, even if it is here, then we get like two values, So एक ग्राफ है हमारे पास, अगर इस ग्राफ में हम मिनिमम डेविएशन देखते हैं तो मिनिमम डेविएशन पे हमें सिर्फ एक ही वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलता है, लेकिन इस ग्राफ में हर एक पॉइंट पे अगर हम डेविएशन देखते हैं तो उस पॉइंट पे हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलता है। लेकिन आप देखो क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, कि ऐसे क्वेश्चन को आप देखो कि डेल्टा इज इक्वल टू 30 मिल गया और आई इज इक्वल टू 15 डिग्री और 60 डिग्री मिल गया, मतलब आई 15 भी हो सकता है 60 भी हो सकता है, मतलब एक यहाँ पे आई होगा और एक यहाँ पे ई होगा, दैट इज़ द इमर्जेंट रे। क्योंकि आप देखो कि अगर हम इमर्जेंट रे पे कोई मतलब इमर्जेंट एंगल पे कोई रे डालते हैं तो वो इंसिडेंट रे के एंगल से निकलता है, और अगर हम इंसिडेंट रे के एंगल से कोई रे डालते हैं तो वो इमर्जेंट एंगल के रे से निकलता है, मतलब उस एंगल से निकलता है। मतलब अगर हमने 15 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस से एक रे डाला तो 60 डिग्री एंगल ऑफ इमरजेंसी निकलेगा और 30 डिग्री डेविएशन सफ़र करेगा। लेकिन अगर हमने 60 डिग्री एंगल से किसी रे को डाला तो वो 15 डिग्री एंगल से निकलेगा बाहर और 30 डिग्री का डेविएशन सफ़र करेगा, मतलब ये होता है रिवर्सिबिलिटी। सो हमारे पास एक प्रेजेंट फार्मूला है कि जो प्रेजेंट फार्मूला था हमारे पास वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है द प्रिज्म एंगल ई। सो यहाँ पे निकालना है ए इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस डी। सो इसमें आई और ई तो हमें पता है कि एक आई है एक ई है,
किसी को भी आप आई और ए मान सकते हो, मतलब 15 + 60 - 30 मतलब 75 - 30 मतलब 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ WBJEE 2025 PYQ. It was asked in the physics section of WBJEE of 2025. In the question, we are given that a radioactive nucleus decays as follows: X, alpha decay X1, beta decay X2, alpha decay X3, gamma decay X4. So we have to find if the mass number and atomic number of X4 are 172 and 69, so given that the mass number and atomic number of X4 are 172 and 69 respectively, then the atomic number and mass number of X are, then atomic and mass number of X are what? So for solving this type of question, you must remember one thing, that the decay rule. For decay, there are mainly three types of decay: alpha, beta, gamma. So let us understand what are these three types of decay. Decays are mainly three types: alpha, beta and gamma. For alpha decay, remember always that it loses 2 protons and 2 neutrons, -2 protons and -2 neutrons. For beta decay, always remember beta decay means a neutron turns into proton. In beta decay, a neutron turns into proton. And gamma decay means release of energy only, and there is no change or conversion of proton and neutron. So gamma decay means energy release. Now so let's calculate it from the back side. Okay, now see one thing, that in the question we mainly have to calculate the change in mass number and atomic number to find the actual mass and atomic number of the nucleus X. Now see, for this you see in alpha decay the mass number changes by 1 2 3 4 -4. See, 2 protons and 2 neutrons contribute to about 4 mass numbers, so the mass number will change by -4. It means the mass number will decrease by 4, and the atomic number will decrease by 2, because atomic number depends on number of protons, and if it decreases by 2, then also atomic number will decrease by 2. In beta decay, you see that a neutron converts to proton. It means that mass number will be same because it's neutron plus proton, so delta A is equal to 0, but the delta Z will increase by +1. And see, in gamma decay you see that there is no conversion or there is no release of proton or neutrons. It's just about energy release, so delta A and delta Z both will be 0. So delta is equal to 0 and delta Z equal to 0. So now let's calculate the mass number and atomic number of the nucleus X. So for calculating it, you see how many alpha decay are there. See, there are 2 alpha decay, 1 beta decay and 1 gamma decay. So let's calculate the delta A. So delta A will be, it will be obviously in minus, but how much minus? Let's say it, delta A will be, you see, delta A is -4 for alpha decay. There are 2 alpha decays, so delta A will be -4 into 2 is equal to -8. It means 172 -8. It means it will be, if we subtract 8 from 170, but the answer is not coming in this way. Mass number is already given here, 172. Change in mass number is -8. Okay, so okay,
okay, this is alpha decay, so here it will not be, you see that from x to x4 there will be -8 because this is decay. But if we consider from x4 to x, it will not be decay, it will be plus, because see, it decays from x to x4 but it does not decay from x4 to x, rather it gains from x4 to x when it travels. So let's properly clarify it. So for calculating x, we need 172 plus 8, that will become 180. So it's 180, so obviously the option number A will be the correct. And same we can calculate it for the delta z, because see, delta z here will be, see how many alpha decay are there, there are two how many alpha decay are there, there are 2 alpha decay, so 2 into, for alpha decay change in z is -2, and see the other will be plus. How many beta decay are there, beta decay only one beta decay, so it will be -4 plus 1 is equal to -3. But as the decay is from x to x4 and we need to calculate from x4 to x, then we need to add 3. Then if we add 3 to 69, then it becomes 72. So obviously the option A is our correct answer. So it's the final and correct answer is option A, 20 number option A. Here in this question we are given that a particle of charge q and mass m moves in a circular orbit of radius r. There is a circular orbit of radius r with a charge q and mass m moves in a circular orbit of radius r with angular speed omega. The ratio of magnitude of its magnetic moment to its angular momentum depends on. So we are given a charge q and mass m moves in a circular orbit of radius r with angular speed omega, and we need to calculate its m is magnetic moment and L is angular momentum. So we need to find the ratio between its angular moment and angular momentum. So we know that angular moment is NIA. We know angular moment m is equal to NIA. Here n is equal to 1 because it's only about one round, so obviously n will be here 1. I is q by t, and a is here pi r square, and see, we can correlate time with w. So if for correlating time with w, we know that t is equal to 2 pi by omega. So m will become q pi r square and t is 2 pi by omega, so 1 by t will be omega by 2 pi, so pi and pi will get cancelled and the value of m will become q r square omega by 2. It's the value of m, and now we are asked to find L is equal to m v r, and we know that v is equal to r omega is equal to m r omega, r is equal to m r square omega. So L is m r square omega, and we need to find the ratio between magnetic moment to angular momentum, that is m is to L is equal to q r square omega by 2 into 1 by m r square omega. So r square cancel, omega cancel, it will be q by 2m. So answer will be only q and m, that is the option number C will become correct. So for the question number 21, here we get that only the option number C becomes correct. This is question from WBJEE question paper of 2025 physics section. It's a question of fluid mechanics and U-tube concept. So in the question we are given that 3 different liquids are filled in a U-tube. You can see that 3 different liquids, they have density rho 1, rho 2, rho 3 are filled in a U-tube. Their densities are given here. From the figure we may conclude that is we need to derive the relationship between rho 1, rho 2 and rho 3. So remember that for deriving the relationship between rho 1, rho 2 and rho 3, first draw a reference line. See, here we are already given a reference line, so take it as a reference line. We are drawing here it as a reference line, and this is one of the most important steps for solving this type of problem. Without it the problem can't be solved. First of all, we drew a reference line.
Now remember the fact that the pressure in this region must equal the pressure in this region, and let's do it now. See, we have to equate the pressure of this region with the pressure of this region. So let it be P left and let it be P right, because it's in the left side and it's in the right side. So let's calculate the P right first. So P right is the pressure that is applied on this. It will be P ATM, because see, P ATM is applied above the top. So P ATM plus rho 2 GH. P ATM is the atmospheric pressure that is applied from above rho 2, and rho 2 is the and rho 2 GH is the pressure that is applied by the second liquid, and height and H is the height of this liquid. So P right is P ATM plus rho 2 GH, and P left, let's calculate the P left. P left is, you see here is P ATM as well. Sorry, it's P ATM actually. P ATM is already here, and this will result in rho 1 GH as we have seen above. And now the interesting part comes, that you see this liquid will itself exert pressure on itself. As you can see, it's h by 2 extended from here. From here it's h by 2 extended up. So this h by 2 height will also add an additional extra pressure, that is of, you can see it's rho 3 G H by 2. It will be the additional pressure offered by it. So P left will be P ATM plus rho plus rho 1 G what's going on, plus rho 1 GH plus rho 3 GH by 2. And now equate this P right and P left. So if we equate this, you can see P ATM and P ATM will get cancelled, and rho 1 and see GH and see rho 1 GH plus rho 3 GH by 2 is equal to rho 2 GH. So GH and GH will get cancelled. From there we can get that rho 1 plus rho 3 by 2 is equal to rho 2. Rho 1 plus rho 3 by 2 is equal to rho 2, and now multiply by 2. So rho 1 plus rho 3, I mean 2 rho 1 plus rho 3 is equal to 2 rho 2 by multiplying it with 2. So option number C will become the correct option. Option number C is given rho 3. Rho 3 is equal to 2 rho 2 minus rho 1. You can see option number 3 is the correct option here. Option number C. See, this is a very good question, and this question has come in WBJEE 2025 previous year paper. And so let's read this question and try to solve it. In the question it's given, what are the charges stored in 1 microfarad and 2 microfarad capacitors in the circuit as shown in the figure once the current I becomes steady state. So remember that for any capacitance problem, if it's given that the capacitor in the circuit, and if it's given that current I becomes steady, then remember that it means when current I becomes steady, then there no current flows through the capacitance and it becomes 0. It means I'm at this stage, when the I becomes steady, it means that no current will flow through this circuit, and I mean through this wire and through this wire. It means through this branch current will be 0, and this will not be taken into consideration, and what will be taken into consideration will be 1 kilo ohm and 2 kilo ohm. So let's calculate the resistance. So equivalent resistance will be 1 kilo ohm plus 2 kilo ohm, that is 3 kilo ohm, and 3 kilo ohm will become the equivalent resistance. So the equivalent the current that is going to pass through it is I is equal to, see, V is equal to IR, so I is equal to V by R is equal to V is 6 by 3000. It's 2 milliampere. So 2 milliampere current will flow through it. But if 2 milliampere current flows through it, then VAB will be what? VAB, it means this branch. What will be the voltage across this branch? Because we have to calculate the charge store, and for calculating the charge store, the formula of Q is C into V, as C is equal to Q by V, so Q is equal to C into V.
So we need to calculate VAB. So V is equal to IR, we know that, and the value of I is already 2 milliampere, and value of R here is given is 2 kilo ohm, and so milli will get cancelled with kilo, and so VAB will become 4 volts. So VAB will become 4 volts, and so we need to calculate Q. First of all, Q across Q1 and then Q2. This one is Q1. Q is equal to C into V. See, C here is 1 microfarad into V. V is given 4 volt, and here C is given 2 microfarad and 4 volt. So the answer will become 4 and 8 is equal to 4 is equal to 8. Answer will be 4 microcoulomb and 8 microcoulomb. That is the option B will become the correct option here. This is a very good question, and this question has come in both JEE and WBJEE, and I have taken it from the paper of WBJEE 2025 physics paper. In the question, it's given that a ball falls from a height h upon a fixed horizontal floor. The coefficient of restitution for the collision between ball and floor is E. The total distance covered by the ball before coming to rest is. So, in this question given that, let's draw the diagram for this question. A ball falls from a height h. We are given a ball. We are given a height h, and here's the ground, and the ball falls from the top, and see, it's given falls, it's not given thrown, so U is equal to 0. Let the ball falls with the velocity v to the ground. Okay, we are letting it, and the question is given from a height h upon a fixed horizontal floor. Okay, a ball falls. Okay, the coefficient of restitution for the collision between ball and floor is E. Coefficient of restitution given here is taken E. E is the coefficient of restitution that will take place when the ball collides with the ground, and after the collision we need to find the total distance covered by the ball before coming to rest. Now you imagine the situation: a ball is falling from air to the ground. It falls on the ground, and then see, if it falls on the ground and then it will again rebound up, and it will again fall like this on the ground. Again it will rebound up and it will fall on the ground, and again it will rebound and it will fall on the ground, and this phenomena will continue and keep on going. It will keep on going until the ball comes to rest. So we need to calculate the total distance. Like, imagine if it's h, then if it h2 is ht, h4, like this. We need to calculate the total distance that is covered by the ball. See, first distance covered is h. That's understandable because first the ball covered h distance, and we need to find the next subsequent distances that will be covered by the ball. See, this concept is taken from the concept of collision that comes in the chapter of center of mass and collision, which further comes in under the topic of mechanics of class 11. Okay, so now here we need to know the formula that suppose something hits some hard object, then after rebounding, suppose the ball falls from the air and it strikes the ground, and again when it will rebound up, then its velocity will change. But how? See, it fell with velocity v. See, if it falls with velocity v, then after rebounding its velocity will become ev. Then again after falling, again it will be multiplied by v, like it was ev, then it will be, after falling it will be again multiplied by e. Like this it will keep going on multiplied by e after rebounding. So given the coefficient of restitution is E, the ball falls from a height h, and again it rebounds, so it will become ev. It will be multiplied with e, the final speed that with which it hits the ground. It will be multiplied with e, that is the coefficient of restitution. And now see one thing, we see the ball
initially was at rest, so u is equal to 0, and we know that 2gh is equal to v square minus u square, and u is here 0. So from here we can see that it's from the second law of motion, that 2as is equal, no, it's, I think it's third law of motion, 2as is equal to v square minus u square. Sorry, not law, I mean equation of motion. So here, from here we can get that h is directly proportional to v square. So here we can see that h will be directly proportional to v square. It means that if the height was initially h, then after rebounding, what will be the height? It will be e square h, because see, velocity was initially v and it became ev, it was multiplied by e. So if h is directly proportional to v square, then h will be multiplied by e square, and the final height will become e square h. Now see, the ball will once go up and then come down, go up and come down will be done 2 times, so the height will become actually 2e square h, 2e square h, because we are taking going up and coming down, so total height will be 2e square h in one go, and this will keep on multiplying like 2e square h, then it will become like 2e to the power 4h, then it will become like 2e to the power 6h. I mean e square will keep going on multiplying with e, then 2 e power 8h, like this it will go on multiplying. See, it keeps going on multiplying on the subsequent rebounds, and initially the height that is it covered was h. So to find the distance we need to make it an infinite gp. See, so total distance let it be d is equal to, it will become h plus 2e square h plus 2e to the power 4h plus 2e ki power 6h plus 2e to the power 8h. See, it will keep on going like this, and see, we can turn it into infinite gp, like take h plus 2 it will be not like this. Once again, it will be like take 2e square h common, take 2e square h common, like h plus 2e square h, let's take it common, then it will become like 1 plus e square plus, like I mean it will keep going on like this. It will keep going on and going on, so it will become an infinite gp, and then we need to apply the final formula for solving the infinite gp, and we must know about the formula for solving infinite gp. So the formula forming infinite gp is a by 1 minus r, where a is the first term and r is the common ratio. So here a is given 1 and r is given e square. So let's solve it. So it will be h plus 2e square h multiplied by 1 minus r, r is e square, 1 minus e square into a is 1. So let's solve it. It will become like h plus 2e square h by 1 minus e square is equal to 1 minus e square, let's take it common, so h so it will become h minus h e square plus 2e square h. So it will become like, see, 2e square h minus e square h is e square h, e square h plus h divided by 1 minus e square is equal to e square plus 1 minus e square into h. So 1 plus e square divided by 1 minus e square into h. So option number B will be the correct option, and this was a very good question that we have solved. So option number B is the correct option. This is a question of WBJEE 2025 physics paper. So in this question we are given that temperature of a body theta
is slightly more than the temperature of surrounding theta naught, its rate of cooling versus the temperature of body theta is plotted. Its shape would be, so for this we can apply the equation of Newton's law of cooling. According to Newton's law of cooling, it's given rate of cooling is equal to R is equal to K theta minus theta naught. See, here R is rate of cooling, K is positive constant, theta is given temperature of body, and theta naught is surrounding temperature. Now see the R that is given along the y-axis. R is given. Now see, let's solve it by elimination. See, K is given positive constant, so the slope must be positive, and it's of the form y is equal to mx. You can see the form like this, y is equal to mx plus c. The form becomes like this because it becomes like R is equal to k theta minus theta naught. It becomes like R is equal to k theta minus theta naught. So it becomes like an equation of a straight line. So first of all, the graph will be straight line, so option number C is already eliminated. Now see that the slope is positive. Given that slope is positive, so option number A and option number D will be eliminated, because in option number A slope is 0 and in option number D slope is negative. So option number B will be correct because its given slope is positive. This question was asked in WBJEE 2025 physics paper. So in this question we are given that a piece of granite floats at the interface of mercury and water contained in a beaker. So we can see that here is a granite rock, here is mercury, and here is water in a beaker. If the densities of granite, water and mercury are rho, density of granite is rho, density of water is rho 1 and density of mercury is rho 2 respectively. The ratio of the volume of granite in water, let it be V1. Volume of granite in water. Let volume of granite in water equal to V1 and let to the volume of granite in mercury, and let the volume of granite in mercury equal to V2. So in the question we are given that we have a granite rock which is kept in the interface between two media, that is one of the medium is water and the other medium is mercury, and the volume of granite that is present in water is V1 and volume of granite that is present in mercury is V2, and the density of granite is rho, density of water is rho 1 and density of mercury is rho 2. We need to find the ratio of V1 is to V2. So for this there is a simple step, that is just balancing of forces. See, granite, the downward force will be mg, that is the weight, and the upward force will be buoyant force by water plus buoyant force by mercury. This is the upward force, so we need to just equate the upward and downward force. See, density is equal to mass by volume, so mass is equal to density into volume. So mass is equal to density into volume. See, let volume of granite be V. Let volume of granite be V. If this is not the volume of water or mercury, this is the volume of granite. So according to question, V is equal to V1 plus V2. So M is equal to density into volume, density into V1 plus V2. Okay, this is our equation number 1. See, FB, buoyant force due to water, will be density of water, that is rho 1, volume of density of water and also volume of the granite that is present in water, that is V1, and the gravitational acceleration, that is
G, it becomes rho 1 V1 G, and similarly buoyant force due to mercury will be rho 2 V2 G. So it becomes rho 2 V2 G. So this becomes our equation 2, and this becomes our equation 3, and we need to solve this by 1 is equal to 2 plus 3. Mg, it is mg is equal to, and it will be also multiplied by g. So if we equate this, see, first of all, rho v1 plus v2 into g, 1 is equal to 2, rho 1 v1 plus rho 2 v2 into g. Let's cancel the g. Now we have to find the ratio between v1 and v2. So rho v1 plus rho v2 is equal to rho 1 v1 plus rho 2 v2. So rho v1 minus rho 1 v1 is equal to rho 2 v2 minus rho v2. So v1 rho minus rho 1 is equal to v2 rho 2 minus rho. See, from this we can write v1 by v2 is equal to, we need to find in the question given that we need to find ratio of volume of granite in water, that is v1 is to v2, to the volume of granite in mercury, v1 is to v2, that is rho 2 minus rho by rho minus rho 1, rho 2 minus rho by rho minus rho 1. So option number A will be the correct option. This is a question of WBJEE Physics 2025. It has come in the paper of WBJEE 2025 Physics paper. So let's solve this question. For solving this question, let's first read the question. In the question, it's given that the apparent coefficient of expansion of a liquid when heated in a copper vessel is C. मतलब जब कोई लिक्विड को हम कॉपर वेसल पे हीट करते हैं तो उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है उस लिक्विड का वो होता है C, एंड व्हेन वी हीट इन सिल्वर वेसल इट बिकम्स S. मतलब जो सिल्वर में जब हम कोई जो उस लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है वो S हो जाता है. इफ A इज लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कॉपर, मतलब अगर लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कॉपर अगर A होता है हमारे पास, देन द लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर का लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हमारे पास क्या होगा. तो चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा. तो पहले इसके लिए आपको एक फॉर्मूला जानना होगा कि जो हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन को देखते हैं, मतलब आप एक चीज़ याद रखो कि जब भी हम देखते हैं कि कोई एक वेसल के अंदर अगर कोई लिक्विड एक्सपेंड हो रहा है तो जो हम देखते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हमें अपैरेंट लगता है कि वो एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन वो उससे ज़्यादा ही एक्सपेंड होता है. मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन रियल इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अपैरेंट प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेसल. मतलब जब हम देखते हैं कि कोई लिक्विड एक्सपेंड हो रहा है वो रियलिटी में उससे ज़्यादा ही एक्सपेंड होता है, क्योंकि जो वेसल है वो भी उसके साथ एक्सपेंड हो जाता है. तो जब हमें रियल एक्सपेंशन निकालना होगा तब हमें गामा दोनों का ही निकालना पड़ेगा. मतलब गामा अपैरेंट प्लस गामा वेसल हमें निकालना होगा. और एक चीज़ आप याद रखना, दिया है कि इफ़ ए इज़ लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, आप याद रखना कि गामा इज़ इक्वल टू और इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 अल्फ़ा. इसका मतलब जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, गामा है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और अल्फ़ा है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ये आपको पता होगा कि अल्फ़ा हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और गामा हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. तो आप पहले देखो कि पहले हम कॉपर के लिए सॉल्व करते हैं. गिवन है कि द अपैरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड व्हेन हीटेड इन ए कॉपर वेसल इज C. तो अपैरेंट की जगह हम लिख लेंगे C. व्हेन हीटेड इन सिल्वर वेसल इज S. इफ A इज लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कॉपर. आप देखो कि जो वेसल है उसका लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हमें दिया है A, तो जो गामा होगा वो गामा हो जाएगा क्या 3A, क्योंकि आप देखो कि लीनियर कोएफिशिएंट जो है उसका 3 टाइम्स होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3A. तो गामा जो कॉपर के लिए आएगा यहाँ पे, मतलब
मतलब जो गामा रियल आएगा हमारा कॉपर वाले लिक्विड के लिए वो आएगा ये C+3 है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, आप देखो कि कॉपर वेसल, जो कॉपर वेसल आया उसका हमें इक्वेशन मिल गया कि गामा रियल जो आता है कॉपर वेसल के लिए वो आता है हमारे पास C+3 है। अब हम सॉल्व करेंगे सिल्वर वेसल के लिए। सिल्वर वेसल के लिए ये हमने कॉपर लिख लिया। जो सिल्वर वेसल के लिए सेम टाइप से हम लिखेंगे कि गामा रियल इज इक्वल टू गामा एपरेंट। एपरेंट आप देखो कि द एपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड व्हेन हीटेड इन कॉपर इज C एंड व्हेन हीटेड इन सिल्वर इज S। तो ये आ गया S प्लस गामा वेसल। गामा वेसल क्या होगा 3 टाइम्स अल्फा सिल्वर, मतलब सिल्वर का जो लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है उसका 3 टाइम्स आएगा ये। और गामा रियल का वैल्यू आप देखो कि C+3 ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं C+3A इज इक्वल टू S+3 अल्फ़ा। और अल्फ़ा का वैल्यू हमें निकालना होगा क्योंकि अब देख लो कि लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सिल्वर पूछा है क्वेश्चन में, तो ये ऐसा होगा C+3A माइनस S/3 इज इक्वल टू अल्फ़ा। अल्फ़ा इज इक्वल टू C+3A माइनस S/3, C+3A माइनस S/3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। This is a good question and this question was asked in WBJEE physics paper 2025. So let's solve this question. In this question we are given that two spheres S1 and S2 of masses M1 and M2 respectively collide with each other. आप देखो कि दो स्फेयर था हमारे पास, एक था हमारे पास S1, एक था हमारे पास S2 ऑफ मासेस M1 एंड M2 कोलाइड विथ ईच अदर। इनिशियली S1 इज़ एट रेस्ट, मतलब इनिशियली S1 का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है एंड S2 इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी v अलॉन्ग x, मतलब और S2 का जो वेलोसिटी है वो अलॉन्ग x है, मूविंग विथ वेलोसिटी v अलॉन्ग x। आफ्टर कोलिशन S2 हैज़ ए वेलोसिटी, मतलब जो ये है v आई कैप हो जाएगा। आफ्टर कोलिशन S2 हैज़ ए वेलोसिटी v/2, ये बिफोर कोलिशन है। और आफ्टर कोलिशन ये है हमारे पास बिफोर कोलिशन, सॉरी सिंगल एस आएगा COLLISION। बिफोर कोलिशन ये था हमारे पास। और आफ्टर कोलिशन S2 हैज़ वेलोसिटी v/2 इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल डायरेक्शन, मतलब ये जे कैप हमने मान लिया इसको। द स्फेयर S1 मूव्स आफ्टर कोलिशन और M1, इसका हमें वेलोसिटी निकालना होगा और डायरेक्शन निकालना होगा। आफ्टर कोलिशन ये वाला सीन है हमारे पास। तो पहले एक M1 मास था, एक M2 मास था, दोनों के बीच में टक्कर हुआ। M2 मास पहले एक्स एक्सिस में चल रहा था वेलोसिटी v के साथ, और टक्कर के बाद v/2 वेलोसिटी उसने पकड़ लिया लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो चलो इसको सॉल्व करते। पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे अलोंग x डायरेक्शन आप देखो, अलोंग x आप देखो कि मोमेंटम जो वो है वो पहले m2v आई कैप, ये था इनिशियल मोमेंटम। अलोंग y में इसका कोई मोमेंटम नहीं था, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका कोई काम नहीं है अभी, नहीं मतलब इसका अभी काम नहीं है लेकिन बाद में काम आएगा। तो अलोंग y इसका 0 मोमेंटम हुआ। गिवन कि आफ्टर कोलिशन S2 मूव्स परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल एक्सिस विथ स्पीड v/2, दिस मीन्स दैट S कैन गो प्लस y और माइनस y। S आप मतलब इसको देखो, ये प्लस जे भी जा सकता है, माइनस जे कैप भी जा सकते हैं, तो इसमें प्लस माइनस लगा लिया हमने इसके डायरेक्शन के लिए। और S1 जो है इसका वेलोसिटी हमें निकालना होगा। इसका डायरेक्शन आप मान लो कि समथिंग आफ्टर कोलिशन जो इसका वेलोसिटी है वो आप मान लो v = vx आई कैप प्लस vy जे कैप, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, समथिंग इसको मान लो। सो फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन क्या हुआ हमारे पास, जो फाइनल मोमेंटम है वो x डायरेक्शन पे क्या हुआ,
एक्स डायरेक्शन में आप देखो कि फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स होगा जो वो होगा m1, क्योंकि m1 का ही एक्स एक्सिस में मोमेंटम है, m2 का तो है ही नहीं मोमेंटम एक्स एक्सिस में, इसका बस y एक्सिस में है। तो ये बन जाएगा हमारे पास m1 vx, फाइनल मोमेंटम अलोंग x आई कैप। फाइनल मोमेंटम अलोंग y, फाइनल मोमेंटम अलोंग y क्या होगा हमारे पास, अलोंग y होगा, अब देखो कि m1 का भी y एक्सिस में है इसका मोमेंटम, इज इक्वल टू m1 vy j कैप प्लस या माइनस v/2 m2 j कैप, ये इसका फाइनल अलोंग y आ जाएगा। और आप अभी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो, जैसे अलोंग x m2v इज इक्वल टू m1 vx, आप देखो कि m2v इज इक्वल टू m1 vx, so the vx will become m2v by m1. Now see, we have taken out the value of Vx and now we need to take out the value of Vy, and for taking out the value of Vy, remember that we need to apply conservation of momentum along y axis. That is, here we can see that along y it was initially 0 but final it was m1 Vy plus v/2, so it's like you can see m1 v is equal to v/2 m2, m1 vy is equal to v/2 m2, because along y it was 0, so we need to equate both of these, and even if we don't equate it, but then also the signs will get balanced, because when we will take the resultant, at that time we take multiplication and square root, so it will get balanced. So इसमें हमने लिख लिया m1 vy is equal to v/2 m2, so vy क्या होगा, vy होगा हमारे पास v/2 m2 by m1, ये vy आ गया, vx आ गया, और हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों का स्क्वायर होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा हमारे पास रूट ओवर m2 स्क्वायर v स्क्वायर बाई m1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर m2 स्क्वायर बाई 4m1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 4m1 स्क्वायर, और यहाँ पे अब देखो 4m2 v2 5 m2 स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 बाई 2 m2 बाई m1 v, तो रूट 5/2 m2 बाई m1 v, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट हो जाएगा। रूट 5/2 m2 बाई m1 v ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और जब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, हमें निकालना पड़ेगा इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आप देख लो। डायरेक्शन निकालने के लिए, और डायरेक्शन अब देखो कि इसका डायरेक्शन tan थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, और tan थीटा आपको पता है क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं, वी वाई क्या है हमारे पास वी वाई है Vm2 बाई 2m1 डिवाइडेड बाई Vx, मतलब इंटू m1 बाई m2v, मतलब इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, या फिर -1/2 भी आ सकता है, क्योंकि एक के सामने तो माइनस था जो कि हमने नहीं लिया, हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन एक के सामने आपको पता होगा कि आप देखो प्लस माइनस था, तो ये भी प्लस माइनस आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लस माइनस 1/2, ये हो गया आंसर। तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1/2। सो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी विल बिकम द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व।